Hi guys, I'm Dr. Marwah and gives me immense pleasure to introduce Dr. Anjali. She's from GMC Baroda. Heartiest congratulations, doctor, on getting rank 25. I think 25 that I can emphasize. How does it feel to get into the double digit elite club? It feels. I was first started at the first when I saw the results. I just gave it to my mom. Ki mummy, aap check karo. I'm not gonna check it this time, and it just appeared like 25. And I'm like, such mein aaya hai. It was a kind of that moment. Yeah, very Okay, happy, very happy. okay, okay. So, Doc, you've been a regular user of PrepLadder all these years. So, share with us some insights into, especially like how would a new user who's into the PrepLadder ecosystem would or should start using like which subjects should they be starting to use the PrepLadder app? Yeah. Per se, I think firstly you need to just figure it out that which subject you're weak at. For Hmm. example, I started with medicine only because I had a huge fear that I have to complete it moreover. But before that, I just completed with my short subjects because I knew कि medicine is going to take a lot of time. And while seeing the videos, I get to know, okay, those 215 videos are there. I was like, यार ये कैसे करेंगे? But ठीक है. But it was very good. I mean, it just got over with the time as soon as you sat for it and just go about, and it happens. Doesn't take a lot. Okay, great. So I'll introduce one fun question at the moment. What is your favorite food item? Noodles, Chinese noodles. I enjoy it a lot. Okay, Even if I so know that's very bad, I still enjoy it. so did you eat them after getting selected? Because we are talking about post dinner time at the moment. Yeah, I haven't had my dinner right now. I'm getting so much of calls. Okay, Yeah, I had thanks. okay. Okay, so you belong to a college where like you have always been into that, you have had seniors who would always be guiding. And even last year, one of your seniors was in a double digit rank. So I think that guidance system matters along with the usage of the app, obviously. So what inputs did your seniors provide to you? Was it a challenge direct कि भाई तुम्हें भी लेकर आना है, लेकर ला के दिखाओ? Or is it like they give you specific inputs कि medicine कैसे पढ़ना है and stuff like that? Whenever we ask them, they definitely give us some kind of inputs. Like medicine is the subject which everyone is concerned about because that is going to take a lot of time, which have to balance with Absolutely. other subjects as compared to that. So they will always say ki, if medicine is going to be something, it's always Deepak Marwah sir. So I was sure, I was like sure short about कि medicine तो मुझे दीपक मारवा सर से ही करना है, and I just completed with that. And yeah, they give us tips like ki GTs early start karo, like solve MCQs as frequently as possible. In fact, Hmm. internship is a time wherein you don't actually get the time to solve such questions. So in between, I'm running for my this sample wala thing from here to there, and I'm just scrolling the MCQs and doing it. Ki chalo bhai do teen dekh lete. I might not get the time. Okay. That is tremendous. I mean, that is dedication, na? Internship, it's so hectic. You're walking, you're going to collect reports or something like that. And in between, आप app खोल के कर रहे हो. So that is like hats off to your dedication. I can understand the hard work that you have done behind the smiling face. I can understand all the pain. I mean, no, there are no gains without any pain. So, Doc, who's your favorite faculty at PrepLadder? So you, Deepak Marwah sir, and even Preeti ma'am, Ankit sir. I mean, these are some of the subjects I'm very feared about. कि ये मुझसे नहीं होगा. Pharmacology, I don't remember drugs at all. I've struggled with it so many of times, and I think they're the best at it. Okay, so I think the foundation starts from pathology and pharmacology, and I think Dr. Yes, sir. Ankit and Dr. Preeti, they made it like, very strong foundation on which you can build this. How many hours do you think is like first time pharmacology read, hours for pathology initially, like somebody who's doing it first time from the app? I think, sir, 8 to 10 days are enough if you are going on with one subject at a time. So I'm that Mhm. kind of person who don't switches the subject as अगर completing हुआ है तो I won't switch the subject per se. Mhm. I would just complete it in a one go, and I can say like pharmacology you can go with 8 to 10 days are enough if you're sitting at a stretch of like 5 to 6 hours, and I would go at 2x wala speed. And yours as well, sir. I think I have completed when you start the videos and when you give the introduction, ki you have to do it in 1 month. It's possible. So I do it Mhm. in that 1 month. कि करना ही है 1 महीने में. I don't want to give extra amount of time to the subject.
ओके, सो 2x पे तो आवाज थोड़ी क्रोकिंग सी हो जाती है। फिर इस तरह से हो जाता है। हो जाता है। ओके यू गेट ओके। अडेप्टेड टू इट। हाँ, समझ आ रही है। हाँ 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 हाँ। आई थिंक 1x पे, आई थिंक फर्स्ट टाइम आप 1x पे जब बात कर रहे हो आप मुझे 1x पे सुन रहे हो। ओके, एनी फनी निमोनिक्स ऑफ प्रीति मैम और अंकित सर दैट यू रिमेम्बर? तो टेट्रासाइक्लिन्स के लिए कपिल देव, आई थिंक फार्मेक में तो इतने सारे निमोनिक्स है, इवन आई यूज्ड टू फॉरगेट द निमोनिक्स एंड देन आई रिमेम्बर, हाँ कुछ ऐसा नाम था, समथिंग अ लिंक अबाउट दैट, एंड आई सर्च फॉर द वर्ड कि के से होगा, समथिंग माइट बी दिस ओनली, एंड आई डू इट। हाँ, तो कंट्रोल्ड गेसिंग इज आई थिंक इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। यस। ओके ओके। एंड पैथोलॉजी जो है वो लाइक इट इट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर, लाइक पैथो और मेडिसिन और फार्मा, ये सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड मिक्स ही थे, मतलब आई कैन नॉट से कि मेडिसिन का क्वेश्चन है ये फार्मा का है। एंड आपने जब रिकॉल वगैरह सुना, डिड यू एक्चुअली लिसन टू द रिकॉल्स, एनी ऑफ द रिकॉल्स? So frankly, I was very fearful at the first moment when I heard the paper is very easy. You're gonna face so much of inflation, and that was just like, कि नहीं अब मुझे recall नहीं देखना. I don't have the amount to just face it off. And then after 2 to 3 days, it was like कि एक बार देख तो लूँ क्या होने वाला है, और should I sit up ओके again to study? ओके And then I saw the recalls. Yeah, I बहुत सारी मेहनत करके फिर मैं बैठ गई कि चलो देख ही ओके। लेते हैं. तो उसमें अंदाजन लाइक हाउ मच वर यू एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, और अभी कितने आए? So I was expecting around 660 with 5 to 7 controversial questions. ओके, और अभी आपका मार्कशीट तो आ गया अभी ना, तो उसमें अभी कितने हाँ, मार्क्स आए? I had 678. ओ, आपका पॉजिटिव है। प्लस एक। ओके ओके, सो मैं तो जिससे बात करूँ कह रहा -50 है, तो मुझे लगा -50 में बताओगे, आपका +18 है। फिर मैंने सारे कम ही कर दिए थे, मतलब मैंने अपना लीस्ट रख दिया था कि इतने तो आने चाहिए, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा. ओके ओके, नहीं नहीं, आप तो मतलब हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन, मतलब अब तो वी नो व्हाई यू आर इन डबल डिजिट्स, क्योंकि आपने तो इन्फ्लेशन के जमाने में पॉजिटिव शिफ्ट दिखाया है। ओके ओके, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू अ कपल ऑफ गाइस, दे वर प्रीटी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि एक्चुअली आई थिंक काफी डिस्क्रिपेंसी थी वो, जैसे कई क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, बट वही था प्री ऑपरेटिव फेओक्रोमोसाइटोमा, या प्री ऑपरेटिव और इंट्रा ऑपरेटिव लिखा हुआ है, तो रिकॉल डिस्क्रिपेंसी थी, तो वो तो मैंने छोड़ ही दिया लास्ट में कि यार ये तो मतलब रहने दो, फिनॉक्सीबेंजामीन मुझे इसका बस आंसर देगा। सीनियर्स ने इतना बोला था कि जितने क्वेश्चंस जो है कि हमें पता है कि हाँ दिस आर करेक्ट, तो हाँ हाँ उससे तुम हाँ। गेस कर लोगे कि तुम्हारे कितने आने वाले हैं. बाकी 5 to 7 controversials, इट्स हैपनिंग एवरी ईयर, सो इट डजंट मैटर. या डेफिनेटली व्हेन यू गो अबव इट डज मैटर कि 4 मार्क बढ़ गए 4 घट गए, पर ठीक है. ओके ओके। तो डॉक, अनदर क्वेश्चन इज लाइक जो लास्ट में हमने मॉक्स कंडक्ट किए थे, उसमें लाइक आपने जब दिया होगा तो अप्रोक्सीमेटली लाइक मतलब आपका कर्व कैसे जा रहा था? वाज इट लाइक गोइंग अप, बिकॉज मोस्ट लोग का स्टैटिक रहता है या टेंड्स टू फॉल डाउन, तो लाइक आपकी जर्नी, लाइक लेट्स से 4 लास्ट के जो टेस्ट थे उसमें, लाइक हाउ वाज योर जर्नी आफ्टर एंड बिफोर एनालिसिस करने के बाद में? तो टॉप 10. ओके ओके। तो उसमें मतलब स्कोर इंक्रीज हो रहा था हर बारी, मतलब अगर रेगुलरली आप टेस्ट दे रहे थे तो हर बारी मतलब पीछे? रैंक्स कंसिस्टेंटली कांस्टेंट रहे थे, स्कोर्स में वैरी. हाँ, नहीं नहीं, वो तो क्योंकि वो कई लोग कम ज्यादा दे सकते हैं, बट लाइक द मार्क्स दैट यू आर गेटिंग वर लाइक कंसिस्टेंटली स्टेबल, और लाइक शोइंग अ प्लस माइनस का थोड़ा सा यस. डिविएशन। Okay. So, what was Dr. Anjali doing like 1 week before the exam? Like, what notes was she referring to? Was a bundle of nerves? Was she मतलब पन्ने पलट रहे हैं, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा, मतलब एक रियलिस्टिक टेक, बिकॉज सब ने इस स्टेज से गुजरना है, एंड देयर वुड बी लॉट ऑफ योर जूनियर्स आल्सो जो वुड बी सेइंग, बिकॉज आई थिंक द लास्ट मंथ इज लाइक मेक और ब्रेक, तो लाइक पहले हम Seriously. लास्ट 1 week की बात करते हैं, 1 week बिफोर द एग्जाम। So before that, when INI results came out, I was a bit of dissatisfied कि नहीं ये अच्छा नहीं है. I got 244. And then I was in a 15 months trauma, 15 days of trauma कि यार नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं होने वाला. And then there's another trauma कि the dates are extended for NEET PG 2025. So I had a plan कि सबसे पहले I made mistakes in medicine itself very much in the INI. So I started up with my medicine. I gave it approximately 3 weeks, which was too much that time. But I thought कि बाकी के time में करूँगी क्या? It's gonna be taking 2.5 months we still have in our hands. And then I went about for the last 1 month की strategy. For the first 3 weeks, I just went about with all the subjects. मतलब मैंने 19 subjects revise कर लिए थे.
एंड लास्ट 10 days में इट वॉज मोर ऑफ लाइक कि मैं एक एक दिन में 2-3 शॉर्ट सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दूंगी. एंड लास्ट 5 days आई जस्ट सेपरेटेड मेडिसिन एज अ होल कि अब मेडिसिन नहीं पढ़ना मुझे. आई एम गोना रीड द 18 सब्जेक्ट्स वेरी परफेक्टली. एंड देन द लास्ट 6 days आई वाज जस्ट लाइक कि 2 दिन में सर्जरी, 2 दिन में ऑब्स गायनेक एंड 2 days फॉर पैथ और फार्मा समथिंग. Even at the last day I was looking for the FMG questions कि क्या पूछा, कुछ आ गया तो. नहीं, वो एफएमजी वाला क्वेश्चन आया ना, फुगू वाला, दैट Actually, and I was so happy at the moment I was giving the examination कि हर्ष मैंने देख लिया. And I was very reluctant to see that before the examination. I was like कि पहले ये करूँ या ये करूँ, but then I saw it finally. हाँ, उन्होंने डिस्टेंस भी सेम दिया कि 110 किलोमीटर, अर्थक्वेक के बाद में 110 किलोमीटर दूर किसी और हॉस्पिटल में चला गया. एंड आई वाज लाइक यार, ये एफएमजी एग्जाम का क्वेश्चन क्यों नीट पीजी में पूछ रहे हैं. तभी शायद सर वो बोल रहे होंगे कि रिकॉल्स तुम क्यों जाके बच्चों को क्वेश्चंस बता रहे हो. They were so worried about it. Just don't tell the students the questions that were asked. ओके ओके. डॉक, जैसे प्रेपलैडर के नोट्स आप यूज करते थे, तो मतलब आपने मतलब कुछ खुद भी हैंड रिटन उसमें करते हो, एंड लाइक सम वुड बी लाइक यू यूज सम पार्ट ऑफ द प्रिंटेड नोट्स, तो मतलब थोड़ा सा आप स्ट्रैटेजी बता दो कि नोट्स को कैसे यूज करना है. लाइक कई लोग क्या करते हैं, मतलब मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ. लॉट ऑफ पीपल दे जस्ट पुट वीडियोस एट 2x और वो नोट्स को पैसिवली देखते रहते हैं. कई लोग क्या करते हैं, उसमें हैंडमेड एनोटेशंस वगैरह करते हैं. कई लोग क्या करते हैं, खुद ही नोट्स लेने की कोशिश करते हैं, एंड देन नॉट एबल टू डू. सो लाइक आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी बाय विच यू वर एबल टू अचीव, आई मीन, दिस फेनोमिनल रैंक. सर सबसे पहले तो मैं बहुत धीरे लिखती हूँ. आई एम मोर ऑफ डेकोरेटिव काइंड ऑफ पर्सन. मैं बहुत ज्यादा डेकोरेशन पे करने लगती हूँ. तो आई थॉट कि नहीं, हैंड प्रिंटेड नोट्स आर द वन विच इज मेंट फॉर मी एंड नॉट फॉर दोज राइटिंग डाउन. So I took the handwritten notes, and then I started noting the extra things that you tend to make us write. The explanation part, क्योंकि कुछ चीजें बहुत सिंपली लिखी होती हैं and you don't get it कि ये क्या लिखा है. तो explanations अगल बगल में जो भी थोड़ा सा space उसमें लिख दो, and then you're good to go. I mean, अगर मैंने for example एक वीडियो देखा है, I'll just go it with the 2x वाला thing, and then एक बार वीडियो खत्म हो गया, I'll again just flip the pages and see कि क्या है, कुछ भूल गई. Because at that particular point of time, it will click me कि ये मुझे समझ नहीं आया. I'll go back and I'll just note it down there and there itself. Okay, so like using the notes is like you keep on taking annotations in between and it has to be in your own handwriting to understand. Yes. ओके ओके. और इनको पढ़ना, बार बार पढ़ने से मतलब ऐसा होता है कि बोरिंग हो जाता है, या मतलब दिमाग में नहीं जा रहा है, आई मीन, डू वी गो थ्रू दिस. I think the mastery of this boring process is what makes you gain the rank. I think there's nothing new in this process. You just repeat that boring task and you're good to go. So you have to ओके do this. ओके. So for all the users, I can say that what she said is like very, very precise and to the point stuff. That you just have to listen to the video lectures, whether at 2x, 1.5x, doesn't matter. Just persist daily and keep on doing multiple choice questions. And Doc, I know that your inbox would be full with your juniors at the moment asking you for advice. But like, what is that shout out from GMC Baroda to everybody who's listening out, including your juniors and other people from state and across the country? Like 3 things that you would advise them to do. Start early as possible. Don't wait for the day कि तुम्हारे preparation, तुम्हारे सारे subjects हो जाएंगे and then you start giving the GTs. Just do the GT वाला thing as early as possible. Secondly, just trust the faculties and the notes that has been provided to you. There's nothing more or less. There's all the same things that are going to happen. And thirdly, just build that amount of confidence into yourself that you can do it. It is not like कि तुम नहीं कर concept. Okay, okay. So it is like I think what you said is a very wise things actually that a student has to use. Doc, I think your no, sound connection broke up in between, but it's okay. I mean, that's a part and parcel. Also, sometimes the voice connection can go away. So that is great, Doc. I mean, any last minute advices that you would like to give to whosoever is starting at the moment? सबसे पहले अपने बेसिक्स पे कंट्रोल कर लो. द फाउंडेशन थिंग, द फर्स्ट आई थिंक पीपल टेंड टू इग्नोर द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स व्हिच आर द बेस. अगर आपको मेडिसिन एक पॉइंट के लिए नहीं आती है एंड यू गुड विद फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, यू कैन क्रैक इट आउट. द क्वेश्चंस आरंट सच लेवल कि आपको नहीं आएगा समझ. एंड इफ इट इज ऑफ दैट लेवल, नो वन इज गोना क्रैक इट. दैट्स सिंपल. किसी को नहीं आएगा फिर. Okay. So just go about it for a second. ओके. डॉक, रैपिड रिवीजन जो है वो तकरीबन 180 आवर्स के आसपास का है, तो हाउ इज दैट लाइक यूजफुल फॉर एनीबडी फॉर देयर प्रिपरेशन. तो मतलब अगर आपने नोट्स ऑलरेडी पढ़ रखी है
and you're someone like me, मतलब मैं बहुत stuck हो जाती हूँ. I'll go very slow, very slow. So rapid revision serves as like you can go with again in that too. I'll go with the 2x wala speed and just you can complete it in real very less time per se. ओके ओके सो रैपिड रिवीजन आपने कितनी बार सुना होगा अप्रोक्सीमेटली? तो मैंने एक ही बार सुना था बिकॉज सेकंड टाइम आई वाज लाइक कि अब मुझे वही चीज देखना है जो मुझे नहीं आता. ओके ओके So, Doc, aptly put, like, really thanks for your inputs and heartiest congratulations. And I think you owe yourself an extra plate of noodles. Sure, sure. So, God bless you, Doc, and thanks for joining in. And we wish you the very best from the entire PrepLadder family. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Doc. Take care. Bye bye. Bye bye.